Good morning. Okay, so let's start. In the last class, we were talking about the damping kind of motions where you have some kind of resistive forces in picture. We did get the equation of motion for such kind of systems of this form. I'll just quickly revise whatever we did in the previous class. So we said that you will have an equation of motion for these kind of systems in such a way that if you want to make an educated guess about the solution, you would say that probably the solution for these kind of equations is going to be something like this. Then we plug in the value of x from here, dx by dt and d2x by dt2, and then we finally found out that alpha can actually have two values, alpha 1 and alpha 2. And we said that the most general solution would be a solution which will consist of both alphas, alpha 1 as well as alpha 2. And then we said that my solution would be something like this. We said this will be our most general solution that we can think of. A1 and A2 are constants that you can decide from your initial conditions. For example, if you are given at time t is equal to 0, this was your position and this was your velocity. Then you can calculate the value of both A1 and A2. These are now two only unknown terms in your solution. Apart from that, everything else is known. You know what is the mass of the object. You would know what is the damping coefficient. You also know omega naught, which is your frequency, if there would have been no dissipative forces. Omega naught corresponds to the case in which there were no resistive or dissipative forces present in the system. So this, we said that will be your most general solution for the equation, which is this equation. And this equation has both resistive forces as well as your restoring force. Now, we said that if you look at the term within the brackets, there could be three possible scenarios. In the first scenario, we said that you can have b upon 2m square would be greater than omega naught square, or you can also say that your b upon 2m is greater than omega naught. Right? Omega naught is a frequency. It can't be a negative number. Therefore, you also can say that rather than taking the square of the term, you can simply take the square root on both sides and you can say that b upon 2m has to be greater than omega naught. We said that in this case, since b is associated with your dissipative forces, omega naught is basically associated with your restoring forces. So in these kind of cases, your dissipative force dominates your restoring force. And hence, there will be no oscillations in these kind of systems. And these systems are called as overdamped or deadbeat system. If you look at the solution here, in this particular case, your solution would be A1. I can actually, rather than writing A1, I can take first b upon 2mt out, and then it will be A1 e raised to power plus something t, but this plus here and the term within brackets is smaller than this term over here. So your this term will always be negative, plus you will have A2 e raised to power minus something t. Effectively, your x would be an exponentially decreasing function.
you will have e raised to power minus something into t. So you have an exponentially decaying function with time in this case. So this was one case which we called as overdamped or deadbeat system. And this is what happens in your door stopper at your homes. Now, if you talk about the second case here, let me erase this portion here. In the second case, we said that there is also possibility that you can have your b upon 2m square is equal to omega naught square, or you can say that your b upon 2m is equal to omega naught. In this case, both of the roots alpha 1 and alpha 2 would be equal to each other. If you look at the values of alpha 1 and alpha 2, you will see that both of them would be equal to each other. But nonetheless, still your solution in this case also will be an exponentially decaying function. Let's say your this term becomes 0, your this term also becomes equal to 0. You will have an exponentially decaying function here and here. So your resultant will be an exponentially decaying function in this case also. And hence there will be no oscillations in second case also, which is called as critical damping. Again, your xt would be an exponentially decaying function. And hence there will be no oscillations whatsoever. Now the third case, which is the most interesting case from our point of view and which we will be talking about in a bit detail, is when your b upon 2m square is less than omega naught square. What would happen in that case? So we are going to talk about now the last case. In the last case, we are saying that your b upon 2m square has to be less than omega naught square. Or you can say that your b upon 2m is less than omega naught. Remember, we said that b is a damping coefficient, but we never said that it's a unitless number. Hence, the unit of b upon 2m would be same as would be the unit of omega naught. Then only you can add two terms or subtract two terms when they have the same unit, right? You cannot add distance into velocity. Hence, from here, you can say that both b upon 2m and omega naught, they have the same unit. B naught is damping coefficient, but that does not mean that it's a unitless number. Now, about this particular third case, I can now write my solution xt. I can take e raised to power minus b upon 2mt common out. I'll have a1 e raised to power. Since this is going to be a negative number now, because you are saying that your b upon 2m square is less than omega naught square, I would like to keep the terms within the bracket positive, so I can take minus out here itself. And if you take the square root of minus 1, you will get iota here. And then within the brackets, you will get omega naught square minus b upon 2m whole square. And this term is further multiplied by time. And then you will have a second term here, which will be a2. Again, in a2 also, within the brackets here, I would like to have the positive term. I can take minus 1 square root out. I'll have iota, and then I can write within the brackets omega naught square. And this time there will be minus sign also from here. Minus b upon 2m whole square multiplied by t here. And this would be your
expression for underdamped solution. Let me move this cursor up if I can. If you look at the expression here, in this particular case, which will be your underdamped system. Now you are saying that your restoring force is stronger than your dissipative force. And this will be only case in which you will have oscillations about the equilibrium position. In the case of overdamped and critically damped system, there are no oscillations. Your position simply decays exponentially as a function of time, which basically means that if you have a pendulum and उस पेंडुलम को अगर आपने एक्सट्रीम में ले जाके रिलीज कर दिया तो वो slowly it will come back to its equilibrium position and it will just stop there. There will be no further movement and hence there are no oscillations here. Now if I want to know that at time t is equal to 0 your pendulum was here in the case of overdamped and critically damped at let's say time 2 seconds, where was my pendulum? That's when these kind of solutions they come into picture. You can predict at what amount of time आपका pendulum है वो किस location पे होगा. Even though your displacement is an exponentially decaying function, but you can still make the predictions about the location of pendulum in this case at any point of time, even though there are no oscillations. Critically damped and overdamped में कोई oscillations नहीं होते हैं. Only underdamped system जो होते हैं आपके सिर्फ उन systems में there will be oscillations about equilibrium position. And in this case, underdamped case, even though there are oscillations, but these oscillations are not going to stay for an infinite amount of time. Which basically means that again अगर आप pendulum का case assume करते हो and let's say आपने pendulum को extreme में drag कर दिया है, इस पे dissipative force act करेंगे, it will come and let's say इस direction में it went up to distance a. जब ये equilibrium position से opposite direction में जाएगा तो वो a distance से less distance पे जाएगा because there are some dissipative forces acting on it. Again जब वो आपकी equilibrium position पे आके वापस इस side में जाएगा तो maybe it will stop somewhere here itself. वो इससे आगे जाएगा ही नहीं and eventually उसके oscillations with every oscillations उसका amplitude जो है that would be an exponentially decaying function. Exponentially decay करता रहेगा and eventually आपके oscillations small होते चले जाएंगे and finally वो उसकी equilibrium position पे आके stop कर जाएगा. But that happens only in underdamped system. अब coming back to the mathematics part here, यहाँ पे आपके पास एक exponentially decaying term तो है ही है. Remember, अगर आपके पास e raised to power iota x होता है, you can write it as cos x plus iota sin x, right? And similarly, e raised to power minus iota x को भी आप cosine और sin की term में लिख सकते हैं. There is some mathematics here where you can reshuffle these terms here and there, and eventually ये वाली जो term है, आप उसको एक common term की form में लिख सकते हो, where you say that this is equal to omega t plus phi. Your xt would be given by this expression. Now this omega is not the omega for your undamped oscillation. This omega is basically equal to, let me go to the next page. Okay, so this omega would be now equal to, the omega that I was talking about will be equal to square root of omega naught square minus b upon 2m whole square. And this frequency is called as your damped frequency. ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन आया है, ये आपका एक्सप्रेशन
I lost that page. No, I can't get that page back. Anyway, let's forget about that. ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, हम लोगों ने जो e raised to power iota में जो टर्म लिखी थी, we said that e raised to power iota square root of omega naught square minus b upon 2m whole square multiplied by t. So we have defined this term as your omega d or simply omega. Many times it is written with d to denote that this corresponds to a damped frequency. But since we are using omega naught now for undamped case, so you can simply call it omega also. If you look at the numbers here, your omega is always going to be less than omega naught. That would be first observation from your relation between damped frequency and undamped frequency. That your damped frequency would be always less than undamped frequency. The second observation you can make here is that in the case of underdamped oscillation, even though you are saying your amplitude is going to decay with time, but your frequency does not have any time dependence. Look at the numbers here. Omega naught is constant because omega naught is square root k over m. B is a constant. M is the mass of the spring. That is also constant. So your damped frequency, even though this frequency is less than your undamped frequency, but it is still a constant number, which basically means that your time period is also constant. ऐसा नहीं है कि विद टाइम आपका एम्पलीट्यूड अगर रिड्यूस हो रहा है तो आपके ऑसिलेशंस फास्ट हो जाएंगे, नहीं, आपका एम्पलीट्यूड डिके हो रहा है, बट एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में अब भी आपको उतना ही टाइम लग रहा है जितना कि आपको बिग ऑसिलेशन करने में इनिशियली लग रहा था. दैट वुड बी योर सेकंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम हियर. So we talked about these three systems when you have your b upon 2m square greater than omega naught square, in which case you are saying that your damping term is larger than your. Excuse me, ma'am. Mayank Sharma want to ask some question. हाँ जी. Just unmute the students. Ma'am. हाँ जी मयंक. मैम इन थर्ड केस ऑल्सो, मैम थर्ड केस में भी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में तो आएगा ही ना? हाँ जी, इट विल इवेंचुअली कम टू रेस्ट. पर ये है कि जो एम्पलीट्यूड उसका कम हो रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. एम्पलीट्यूड कम हो रहा है बट फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी. ओके. हाँ जी. Then we talked about the second case. And next one is the Pradyun Sharma. Yes. हाँ जी, बताइए. मैम जो थर्ड केस है उसमें जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो वो तो इनफिनिट टाइम तक डिक्रीज होता रहेगा ना? नहीं, इवेंचुअली आपका अगर आप एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली कम करते रहेंगे तो इवेंचुअली वो रेस्ट पे आ जाएगा. और मैम जो फर्स्ट और सेकंड केस है, हाँ जी, ओवरडैम्प्ड एंड क्रिटिकल डैम्प, उसमें इक्वेशंस हमारी थोड़ी डिफरेंट आई हैं, बट उसमें जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में मूव करेगा उसका जो होगा मोशन वो सेम होगा? नहीं, उसमें आपका मोशन डिफरेंट होगा क्योंकि उसमें आपका ऑब्जेक्ट है वो कभी ऑसिलेट ही नहीं करेगा. Let me show you the picture first probably where I have compared all the three of them. This is how it's going to look like. Underdamped में क्या होगा? Let's say आपने पेंडुलम को एक्सट्रीम में ले जाके रिलीज किया है, ये आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके let's say ये आपका पेंडुलम था, यहाँ पे आपने ड्रैग कर दिया है इसको, and let's say hypothetically आपने इसको 3 सेंटीमीटर से किया है. What would happen? ये यहाँ इक्विलिब्रियम पे आएगा एंड इक्विलिब्रियम पे आके जब सेकंड साइड में जाएगा तो ये 3 सेंटीमीटर नहीं जाएगा, इट विल गो लेस बिकॉज देयर आर डैम्पिंग और रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट. लेट्स से एयर इज प्रेजेंट इन दिस केस. सो लेट्स से अब इस वाले केस में ये अप टू 2.7 सेंटीमीटर जाएगा, which would be your this case here. अब उसके बाद what would happen? It will come back to its equilibrium position. उसके बाद में फिर जब ये वापस इस साइड में जाएगा तो again it would go less than 2.7 centimeter. Let's say probably it will go to 2.4 centimeter. Again it will come to equilibrium, फिर वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा and let's say this time it will go up to 1.8.
कितने ऑसिलेशंस के बाद वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। इन द केस ऑफ अंडर डैम्प वो डिपेंड करेगा आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट कितना है। अगर आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट क्रिटिकली डैम्प्ड से कम है, जो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए आपके चाहिए, राइट, वी सेड इन द केस ऑफ क्रिटिकली डैम्प्ड योर ओमेगा नोट इज इक्वल टू B/2m, right? So we are saying that in this case you have this relation for critically damped which is given by the red line here. अगर आपका resistive forces are less than critically damped तो वो आपके oscillate तो करेगा, but हर बार जब वो एक्सट्रीम्स में जाएगा उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता चला जाएगा। फिर यहाँ पे अदर एक्सट्रीम में आया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया, फिर दूसरे एक्सट्रीम में गया तो ये वाला जो एम्पलीट्यूड है आपका, ये वाला एम्पलीट्यूड इस वाले एम्पलीट्यूड से कम है, ये वाला जो एम्पलीट्यूड था वो इस वाले एम्पलीट्यूड से कम था, इसके बाद वाला जो एम्पलीट्यूड आएगा वो इस वाले से कम आएगा, एंड वो इवेंचुअली ऑसिलेट करता करता फाइनली अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा इन द केस ऑफ अंडरडैम्प्ड। एंड व्हेन आई सेड कि आपका टाइम पीरियड जो है वो चेंज नहीं होगा बिकॉज योर फ्रीक्वेंसी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, व्हिच बेसिकली मींस दैट अगर आप अपना टाइम पीरियड मेजर करो तो अगर आप ये कह रहे हैं कि दिस डिफाइंस योर वन साइकिल, राइट, सो फ्रॉम हियर टू हियर आपको जितना टाइम लगा है उतना ही टाइम यहां से यहां जाने में लगेगा। सो if you look at the amplitude, it looks like यहाँ पे आपका amplitude बहुत large है as compared to from here to here जहाँ पे आपका amplitude बस इतना सा है। But अगर आप अपना time period measure करें between these two points here and between these two points here, तो ये जो time period है ये आपका same रहेगा बिकॉज आपकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वो आपकी कांस्टेंट रहती है। हाँ जी युवराज सिंह बताइए। मैम जो आपने क्रिटिकल डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड का बनाया ग्राफ, हाँ जी उसमें आपने ये दोनों लाइंस मीन पोजीशन से पहले खत्म कर दी, तो मतलब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन नहीं जाएगा, पहले रुक जाएगा? नहीं, पहले नहीं रुकेगा। आपका ऑब्जेक्ट है एट टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी आइडियली बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट एन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। दोनों केस में? हाँ जी, इन द केस ऑफ दोनों में। बट क्रिटिकली डैम्प्ड में आपका जो, अगर आप तीनों किस केसेस में कंपेयर करते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम जो होगा वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फास्टेस्ट आएगा एज कंपेयर टू ओवरडैम्प्ड एंड अंडरडैम्प्ड सिस्टम। क्योंकि अंडरडैम्प्ड में क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, इवन दो वंस इट हैज कम टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन फास्टर देन क्रिटिकली डैम्प्ड, और मे बी 2 टाइम्स भी वो आ जाए, बट क्योंकि वो ऑसिलेट करता रहेगा, सो अगर आप अपने सिस्टम को इक्विलिब्रियम में फास्टेस्ट लेके आना चाहते हो, then you have to design a critically damped system. युवराज सिंह। हाँ जी, Sorry ma'am, युवराज सिंह also raised a hand. हाँ जी, हाँ जी, युवराज सिंह ही पूछ रहे थे अभी। नहीं मैम, वो दूसरा लड़का था। Okay. युवराज, you can ask the हाँ जी, question. युवराज और नीरज बताइए। मैम जैसे आपने इसको B/2m का रेजिस्टिव फॉर्म बोला है, क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट कीजिए बच्चे। इसमें जो दिखा रहे थे B/2m का रेजिस्टिव टर्म बोला है ना, हाँ जी, तो मैम ये एक्सप्लेन कर दो ये कैसे? कि B/2m रेजिस्टिव फोर्सेस में कैसे आएगा? यस मैम। क्योंकि B आपने डैम्पिंग कोफिशिएंट किया है, डिफाइन किया है, तो B/2m जो है वो आपके रेजिस्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करेगा। जितना आपका रेजिस्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे उतना आपका B जो है वो लार्ज होता चला जाएगा। ओके मैम क्रिटिकली डैम्प्ड में सबसे कम कैसे आ रहा है अपना, मतलब टाइम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने पे?
राइट, अब because आपने it's अभी बोला against ना, the intuitions, right? Intuitions के हिसाब से it feels as if overdamped में सबसे fastest वो equilibrium position पे आना चाहिए, but as I said before, अगर आप solutions की बात करते हैं यहाँ पे for the three cases, आपका जो equation में यहाँ पे अगर आप solutions finally find out करते हैं, then you will see that in the case of critically damped, the solutions comes out in such a way that your system is going to come to its equilibrium position the fastest. ओके, बस प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है मैम? उसमें तो लाइक रेजिस्टिव फोर्स और वो रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है ना? In the case of critically damped. यस मैम, तो फिर Okay, तो लाइक उसको भी टाइम लगना better to चाहिए था। explain it in that way, but you can't say that they are exactly equal to each other. अगर वो exactly equal to each other होंगे तो आपका object उसी location पे stop हो जाएगा, हाँ एक्चुअली राइट। right? So these are kind of way to make you people understand, because I'm saying that on B upon 2m you have a term which is associated with dissipative forces. On the second hand side, in the omega naught sphere, you have a term K which is associated with your restoring force. आपका स्प्रिंग जितना ज्यादा स्टिफ होगा उतना ही आपका K है वो लार्ज होगा. राइट, So you can associate them with dissipative and restoring forces, but you cannot say that they actually represent dissipative and restoring forces. ओके, Yes. थैंक यू मैम। मयंक, आपको कोई और डाउट है? यस मैम। हाँ जी बताइए। मैम वो स्लाइड दिखाना जिसमें आपने ग्राफ बनाया था अभी। यस मैम। मैम इसमें जो बी और सी है हाँ जी, वो तो फिर ऑस्किलेशन तो कभी करेंगे नहीं, क्योंकि वो पहले ही मीन पोजीशन पे, मतलब वो कभी मीन पोजीशन को क्रॉस ही नहीं करेंगे ना। hypothetically at t tends to infinity वो आपके मेन पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, ओके क्योंकि मैम। दोनों काइंड ऑफ सम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। बट तो मैम अगर that's what I said, they will never oscillate. Critically damped और overdamped को oscillation कहना wrong है, because there is nothing oscillating there. आपने एक एक्सट्रीम में ले जाके रिलीज कर दिया, आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच के just stops there. और तो मैम लेकिन फिर अगर ऐसे देखा जाए तो जो वो है दूसरा वाला जो हमने लिया अंडर डैम्प्ड, जो उसकी इक्वेशन आई थी x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव, हाँ जी, अगर उसमें हम x को मतलब उसको हम 0 के बराबर कर दें और उससे जो टाइम की वैल्यूज आएंगी, अगर आप इसमें किसको जीरो कर दे, टाइम को जीरो कर दे। नो मैम, इस पूरी एक्सप्रेशन को हम 0 कर दें। ओके, पूरे आप कह रहे हो कि x को मैं 0 पुट कर दूं? यस मैम। मैम तो ओके, उससे t की कुछ वैल्यूज आएंगी, जो सबसे बड़ी t की वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी ना कि वहां तक और चल रहा है कि उस टाइम पे खत्म हुआ है। नहीं, आगे अगर आपने x को 0 पुट कर दिया, देन यू आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन। Yes, x ma'am. इज 0 एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इस पूरे उसको 0 पुट कर दे, x को 0, हाँ जी, तो उससे टाइम की कुछ वैल्यूज आएंगी। कह रहे हो कि मैं x को यहाँ पे 0 पुट कर दूं? यस मैम। हाँ जी, उससे t की कुछ वैल्यूज आएंगी। हाँ जी, तो जो t की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो वही इंडिकेट कर रही है ना कि उस टाइम पीरियड पे ये ऑब्जेक्ट रुक गया उस टाइम हाँ पे। जी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि आपका ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है, राइट? यहाँ पे सो इस केस में ये वाली जो फर्स्ट वाली टर्म है ये आपका एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगी, सेकंड वाली आपका फेज डिसाइड करेगी। आप कह रहे हैं कि एट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपका xt 0 कर दो आप, पर क्योंकि बच्चे आपका xt ये तो ऑसिलेट कर रहा है ना, तो आपका xt तो 0 बहुत बार होगा। तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा हम उसको ले सकते हैं ना। आप कह रहे हो जो t के सबसे लार्ज वैल्यू होगा उसको आप कह सकते हो कि उस पॉइंट पे वो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाएगा। दैट्स व्हाट यस यू आर मैम। सेइंग। यस मैम। ओके, हाँ जी, यू कैन से दैट। कि मतलब मैं पूछना ही चाहता हूँ बीच में तो कहीं ऑब्जेक्ट नहीं रुक सकता ना। नहीं, बीच में नहीं रुकेगा आपका ऑब्जेक्ट, ओके मैम। इक्विलिब्रियम में आके रुकेगा, बिकॉज यू हैव अ कोसाइन टर्म हियर, तो आपका ऑसिलेट कराएगी उसको।
ओके मैम। हाँ जी, attempt to show or something. हाँ जी प्रणीत। Sorry, ma'am. Okay, I thought you were asking a question. So let's revise what I just said, that when you have B upon 2m less than omega naught, that would correspond to your underdamped system. इस सिस्टम में क्या होगा कि डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इज योर B, you will have oscillations here. And we said इस केस में जो आपका solution है that is of a e raised to power minus b upon 2mt cosine of omega t plus phi, and this omega is your damped frequency which is given by this expression here. यहाँ पे आपकी जो first वाली term है that is going to represent your amplitude. So if you look at the amplitude here, you are saying that basically your amplitude is going to decrease exponentially as a function of time. That means अगर आप इसका amplitude measure करके plot करो और उसके tops को अगर आप match करा दो, basically आपका जो oscillations का envelope होगा that would be given by this expression here. Cosine term जो है वो इसमें ये जो आप oscillations observe कर रहे हैं वो introduce कराती है. So you still have oscillations in underdamped system. You still have an associated frequency. You still have a time period also for underdamped oscillation. And your frequency as well as time period, they are constant in underdamped oscillation. Even though your amplitude is continuously reducing as a function of time, but अगर आप कितनी भी दो extremes के बीच में सेम एक्सट्रीम्स के बीच में अगर आप अपना टाइम पीरियड मेजर करें तो वो जो आपका टाइम पीरियड है वो आपका सेम रहेगा. It will remain the constant in the case of underdamped oscillation. The second case, B upon 2m is equal to omega naught, which will be critically damped. कोई oscillation नहीं होगा आपके सिस्टम में. आपका system will come to its equilibrium position and it stops there. Third case, when your B upon 2m is greater than omega naught, which will be an overdamped system. आप अपने system को displace करो, release करो, oscillate again. It's not going to oscillate. It will simply return to its equilibrium position as an exponentially decaying function of time. Now, if you keep on increasing the damping, the time period that your object needs to come back to its equilibrium position, that also keeps on increasing, right? जैसे जैसे आप damping बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे आपका जो time period है वो आपका बढ़ता चला जाएगा for your object to come back to its equilibrium position. So these are three possible scenarios that we did talk about a damped simple harmonic oscillator. And now we were talking about mechanical simple harmonic oscillator. We have already talked about these three curves here. The blue curve represents underdamped motion, red represents your critically damped, and black represents your overdamped system. If you are given three, let's say three different fluids, exactly the same mass and the same spring, if somebody asks in which case if you pull the spring down it will come back to its equilibrium position fastest, that will be your critically damped system. In the critically damped system your system is going to come back to its equilibrium position fastest. Now we were talking about underdamped oscillation. We said that this first term here represents your amplitude, the second term represents your phase, which is your cosine factor over here, and this represents your amplitude, right? Now A here, if you plug in the value of B is equal to 0, if your B is equal to 0, तो आप कह रहे हैं कि आपकी जो रेजिस्टिव फोर्स था जिसको आपने कहा था इज इक्वल टू BV, दैट इज इक्वल टू 0. अगर आपका कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है उस केस में ये वाला जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन शुड रिड्यूस टू योर आइडियल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, राइट? अगर आप कह रहे हैं कोई डिसिपेटिव फोर्सेस ही नहीं प्रेजेंट हैं, सो उस केस में
यहाँ पे ये जो आपका xt है वो आपका एग्जैक्टली सेम आना चाहिए जो कि आपका अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए आ रहा था. Plug in the value of b is equal to 0 and you see that you get a cos of omega t plus phi, which is what we derived for an undamped mechanical simple harmonic oscillator, right? Now another point here is that a here, we said this is your amplitude here, but a represents the amplitude which would have been your amplitude if there were no resistive or dissipative forces present in the system. अगर आपके सिस्टम में कोई भी डैम्पिंग या डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं प्रेजेंट होते तब आपका x कितने अमाउंट तक जा सकता था, that would have been given by A. Now there are a couple of terms defined which is called as your amplitude relaxation time and your energy relaxation time. ये आपका amplitude है. Now I want to define a time in which your this amplitude reduces to 1 by e of its initial value. That means I would like this amplitude to be a over e. What would be the value of time for that? Can you tell me that? Let's unmute some of the people. 2m by v. Right. That would be your time in which your amplitude would reduce to 1 by e of its initial value. And that is called as your amplitude relaxation time. It is defined, sorry for the spelling mistake here. Amplitude relaxation time is defined as the time in which your amplitude decays to 1 by e of its initial value. Similarly, there is another term which is called as energy relaxation time. And energy relaxation time, similar to amplitude relaxation time, is defined as the time in which your energy reduces to 1 by e of its initial value. Remember, क्योंकि आपके यहाँ पे dissipative forces present है, so आपकी जो energy है वो continuously reduce होती चली जाएगी. Energy कैसे reduce होगी? अगर आपको याद है, we said that in the case of undamped oscillation, we derived the expression for energy and we said that energy is equal to 1 by 2 k a square, where k was your spring constant and a was your amplitude. So you can say that your energy is directly proportional to amplitude square. There is another way to do here also. Like in the case of undamped oscillation, हम लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं? We can calculate the potential energy 1 by 2 k x square and we can calculate the kinetic energy also. यहाँ पे आप x की वैल्यू प्लग इन कीजिए, v कैलकुलेट कीजिए, उसकी वैल्यू प्लग इन कीजिए and you will eventually see that आपकी जो एनर्जी है that would come directly proportional to square of amplitude. And यहाँ पे आपका जो amplitude है वो a नहीं है, that is this whole term is your amplitude, right? Amplitude is maximum displacement and that would be given by this expression over here. So if we are saying that your energy is directly proportional to its amplitude square, in that case I can say that your energy का आपका जो expression होगा that would be some constant. If I take square of this term, I'll have e raised to power minus b upon m into t, where E naught now represents your energy in the case of undamped oscillation. Undamped oscillation में ये आपकी energy होती and अब उसमें आपके पास में ये एक additional factor add हो गया है या multiply हो गया है actually. Now if I want to, the people who are interested, please go ahead and do this calculation here and see that do you actually get an expression which has e raised to power minus b upon m over t in this case also. Please do that. Similar to amplitude relaxation time, energy relaxation time is defined as the time in which energy decays to 1 by e of its initial value. Now if I want to calculate that value of time in which your energy becomes 1 by e of its initial value, I would like my e to become e naught over e, and that time in that case would be given by
m upon b in this case. So this would be called as your energy relaxation time. We have two terms, one for amplitude and one for energy. I think there were a couple of doubts. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी गौतम. मैम अंडरडैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए आयोटा की टर्म भी आई थी. आयोटा कहाँ गया फिर एक्स की टर्म में? जो आपका आया था बच्चे वो कोसाइन में आपका एब्सॉर्ब हो गया है, राइट? साइन एंड कोसाइन को आप e raised to power iota x plus e raised to power minus iota x upon 2 लिखते हो ना कोसाइन को? यस मैम. It's absorbed there. हाँ जी मयंक एंड वंदित. मैम ये टीई की वैल्यू जो थी एनर्जी के लिए और टीए की वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए? एम्पलीट्यूड और एनर्जी के लिए? यस मैम. नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. ओके मैम. ओके. आपकी एनर्जी एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. योर एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. ओके मैम. ओके. Good morning, ma'am. Ma'am, you said critical damped के case में we will get to the equilibrium position the fastest as compared to all the three cases. Ma'am, ऐसा क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आया. How about I give you a numerical, an actual example here in which you can see that if you solve the equations here, because we haven't gone into the exact solutions for critically damped and overdamped. So if you solve those equations here, let me show you I have one figure in which it has been actually solved for the three cases. Just give me a second. क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड को तो हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं ना कि जैसे एक बहुत थिक लिक्विड में एक बॉल को डाला तो वो बहुत धीरे गिरेगी और मतलब थोड़ा कम थिक में डाला तो थोड़ी तेज गिरेगी. तो क्रिटिकली डैम्प्ड थोड़ा कम थिक है और ओवर डैम्प्ड ज्यादा थिक लिक्विड में डाला तो वो ऑब्वियसली थोड़ा धीरे गिरेगा. कुछ लोग उसको ऐसे इंटरप्रेट करें ना बच्चे कि अगर आपका डैम्पिंग फोर्स ज्यादा है तो आपका इक्विलिब्रियम पे मतलब वो सबसे अगर आपके कुछ ऐसा फोर्स है जो किसी चीज को स्टॉप कर रहा है, अगर वो लार्जेस्ट है तो वो सबसे फास्ट उसको स्टॉप कर देना चाहिए. मैम लेकिन पर डैम्पिंग तो हर मतलब अगर ओवर डैम्प्ड है तो रेजिस्टिव फोर्स तो हर तरफ से ही लग रही है, सिर्फ एक साइड से थोड़ी ना लग रही है. हाँ जी, दैट्स आल्सो करेक्ट. Let me show you just one proper example where it has been solved actually. I just want to open it with some proper software so that you can actually see it. Okay, and let me share the screen now. Okay, can you see on my screen? Yes, ma'am. Okay, so here an actual scenario has been taken where your equation has been solved for three cases. For example, underdamped में आपका B लिया गया था 15 न्यूटन सेकेंड पर मीटर. क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए आपको B 50 चाहिए था, ओवरडैम्प्ड के लिए आपको 70 चाहिए था. स्प्रिंग कांस्टेंट आपका 30 न्यूटन पर मीटर था, मास 20 kg लिया गया था. तीनों केसेस के लिए इसको सोल्व किया गया है. So if you look at the exact solution here, यहाँ पे so it looks like initially आपका ओवरडैम्प्ड फास्टली आ रहा है, ग्रीन जो आपका क्रिटिकली डैम्प्ड को दिखा रहा है वो थोड़ा सा स्लोली आ रहा है. बट आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यू लुक हियर तो आपका जो क्रिटिकली डैम्प्ड है वो आपका ओवरडैम्प्ड को क्रॉस करके फास्टेस्ट आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है. You can actually solve this equation if you know a bit of programming. Just plug in the value of K30, M20 and B की value और वो एक second order differential equation है. You can try solving that. Okay, मैम मतलब तीनों के बीच में तो वैसे भी फिर भी सबसे पहले तो अंडरडैम्प्ड ही क्रॉस करता है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन लेके. हाँ जी, as such, but permanently फिर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्टे नहीं करता है. तो उस केस में क्रिटिकली डैम्प्ड सबसे पहले वहां पहुंचता है. हाँ जी, उस केस में आपका क्रिटिकली डैम्प्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन पे परमानेंटली आके स्टॉप कर जाएगा. ओके मैम, ठीक है, समझ आ गया. थैंक यू.
ओके मयंक, आपकी कोई और डाउट है बच्चा? नो मैम, मैं भूल गया, सॉरी मैम. It's okay. So I think I'll stop here because the people from other classes have already started joining in, and I'll start in the next class.